Hello everyone, I hope each one of you is doing amazing. Guys and girls, you need to understand that preparation for any competitive exam is not enough. You should be the one who knows how to attempt your examination in a correct manner. So, keeping this thing in mind, I'm back again here with another video to discuss with you the right way to attempt your JEE Mains 2022 examination. सो होगा क्या देंगे सभी एस्पिरेंट्स अपना जेई मेंस 2022 एग्जामिनेशन बट इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड यू विल बी द वन who attempts the paper in a right manner and will be able to yield the successful outcomes. So without wasting any time, let's get started. So guys and girls, have you ever heard people saying कि भाई मैंने prepare तो काफ़ी अच्छी तरीके से किया था but at the end पता नहीं क्या हुआ. I was not able to do my paper in a good way. So, was it because they don't know the questions or because they were nervous? One possible reason for their inability to live up to their expectations may be because they lacked proper strategy. Now you must be like, strategy? What? ऐसा भी कुछ exist करता है क्या? Guys, yes, proper strategy for you to attempt your exam do exist. Having said that, let's come to our strategy number one, which will help you attempt your JEE Mains 2022 examination in a better and in a more wise way. सो नंबर वन स्ट्रेटजी इज यू नो इट वेरी वेल कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स गाइज मेक श्योर यू डिवोट टाइम टू दीज थ्री सब्जेक्ट्स वाइसली आई सेड वाइसली नॉट इक्वली बिकॉज इट इज़ पॉसिबल कि आपका केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन 30 to 40 मिनट्स में हो जाए. Do remember that JEE Mains 2022 examination takes more time in comparison to your practice test. Then second strategy is do as many mock tests as you can. इससे आपको exam pattern का थोड़ा पता चल जाता है and it helps you boost your confidence because you become familiar with the exam pattern. Then the most important part is, guys, do learn the art of time management. Like you are solving a question with a particular method and then बीच क्वेश्चन से आपको याद आता है कि भाई इससे सिंपलर मेथड तो ये था, मैं ये करता हूँ. सो इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन इज जो मेथड आप ऑलरेडी कर रहे थे उसी से सॉल्व कीजिए, और सेकेंड इज स्किप द क्वेश्चन, जम्प टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लीव दिस क्वेश्चन फॉर लेटर फॉर रिव्यू और एनीथिंग. क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है और हाफ, तो और टाइम वेस्ट करके आप स्टार्टिंग से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट योर पेपर. देन यू नीड टू सेलेक्ट योर सब्जेक्ट वाइसली. जो सब्जेक्ट आपको लगता है यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट आउट ऑफ इट दैट टू करेक्टली एंड इन लेस टाइम, वो सब्जेक्ट आप पहले सॉल्व कीजिए. Then, if you have covered 80% of your syllabus and 20% of syllabus is yet to be covered, so go and revise that 80% of syllabus. 20% syllabus को जाके पढ़ने मत बैठ जाइए, ओके? जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, इट विल बी हेल्पफुल. Then, don't focus on the topics you consider hard and are of low weightage. Instead, जो चीज़ आपको अच्छे से आती है, जो सब्जेक्ट, जो पोर्शन, जो टॉपिक्स ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. यू नीड टू वर्क स्मार्टली, नॉट इन अ हार्ड मैनर. इतना बड़ा एग्जामिनेशन देते देते एक पॉइंट ऐसा आता है व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड, यू फील टायर्ड. एट दिस मोमेंट व्हाट यू हैव टू डू, all you have to do is you have to take 30 to 60 seconds break. It will help you regain your lost energy, it will help you freshen up, then you can continue your examination with some more energy. Guys and girls, that was all for today's video. I really do hope you liked watching this video, and guys, trust me, if you keep all these strategies in your mind while solving your examination, trust me, it will really be fruitful for you for your successful and better outcomes. Guys, that was all for today. If you like this video, don't forget to like the video, subscribe to our channel, comment down your views in the comment section below,
and share this video to all the JE Mains 2022 aspirants, the future aspirants, and to whosoever you can. And stay tuned for our another video regarding JE Mains 2022. Bye bye, guys. Take care.